Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I'm BTech student at IIT Kanpur. So today I'm going to solve exercise 10.3 with you all. It's basically related to conic section only. So today we will discuss ellipse in conic section. So ellipse is again one part of the conic only. When we cut the cone from angle, we get ellipse also. So today we will study the geometry of ellipse. So let's start the first question. So what's been asked in the first question? We have to calculate major axis, minor axis, eccentricity, length of lattice rectum, and all these things for ellipse. Okay, so firstly, let me tell you what are these terms uh, by drawing the ellipse. Let me see if I have the ellipse. Okay, let me draw a circle type only. Uh, Let me make it bigger. Okay, so this is our ellipse. Okay, so now let's draw lines. This one and this one. So these are the two major axes of ellipse. Major axis means this one is the major axis, this one is the minor axis. How can we decide which one is the major and which one is the minor? See, the major axis is the one along which your ellipse is more bulged out. Like from here we can see that our x-axis is the major axis and y-axis is the minor axis. So let me write it here. Mm, so this is our major axis and here I can write it to minor axis. Okay. So these are the two axes. Then what we have been asked? We are asked foci. So foci is somewhere here. One is here, another is here. So these are the two foci, and the coordinates of foci are focus is equal to AE, 0 and minus AE, 0. Okay. So here we are talking about standard ellipse only. Uh, This is a very standard ellipse which is centered at the origin. So for ellipse centered at the origin, these things work out. Otherwise, if we take shifted ellipse, then the things are different. Okay. So the axis about which the ellipse is bulged more is called the major axis. Other one is the minor axis. Foci are 2 points, one on plus a comma 0 and other on minus a comma 0. And what is find the vertices? Vertices are these 4 points where the where the ellipse that's the major and minor axis. Major and minor axis are called the vertices, and length of major axis, minor axis is okay. Eccentricity is nothing but b by a, and not b by a. Let me write the formula for eccentricity also. See eccentricity E. Eccentricity E is equal to, or let's write E square. E square is equal to 1 minus b square divided by a square. This is the formula for eccentricity. Okay. So I hope you understood all things. And then length of lattice rectum. For in case of ellipse, the length of lattice rectum is 2b square by a. So length of lattice rectum is equal to 2 times b square by a. Okay.
So I hope समझ में I hope इस आइटम समझ में आ गए होंगे. This is 0, focus is on A, 0 and minus A, 0. This is the major axis, this is the minor axis, and this is the length of lattice sectum. If I make it big, 1 second. Okay, and this is our eccentricity. This thing is nothing but eccentricity. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Let's solve question number 1. इसमें अपने को क्या दिया हुआ है? देखो, जो अपने जनरल इलिप्स होता है उसका फॉर्म क्या होता है? जनरल इलिप्स का फॉर्म किस टाइप का होता है? जनरल इलिप्स का फॉर्म किस टाइप का होता है? x square by a square plus y square by b square equal to some constant equal to 1. This is our general form of ellipse. You can take any ellipse, this is the general form. When x-axis is the major axis, this is the general form of ellipse. And when y-axis becomes the major axis, we just flip it over like b square, then b square becomes greater. So we write it in the same way. So moving forward, in this general form, I can say that here A is equal to, 1 second guys. So here A is equal to, okay. So A is the length of semi major axis and B is the length of semi minor axis. ठीक है, तो अपने को इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिखते हैं. We have given the value of A square to be 36. So from here we can see that A is equal to 6, and similarly, in similar hands, we have given B square to be equal to 16. So from here we can see that B is equal to 4. ठीक है, तो अपन ने A और B के वैल्यू निकाल ली. अपने को चाहिए फोका है. फोका निकालने के लिए आपको इसेंट्रिसिटी भी निकालनी पड़ेगी E. तो E कैसे निकालें? So we know that the formula for eccentricity is E square is equal to 1 minus B square by A square. B square is 16 by 36. 16 divided by 36. So from here we can see that we get 36 minus 16, 20 by 36. This is our E square. So from here we can get E to be equal to 2 root 5, 2 root 5 2 root 5 divided by 6. Okay, so this is our eccentricity. So we got everything which we wanted. Okay, so this is our eccentricity. So now to calculate the foci,
foci FOCI is equal to, I thought it is A comma 0. A 6 is 2 root 5 by 6. So our answer would be 2 root 5 comma 0 and minus 2 root 5 comma 0. So 2 root 5 comma 0 and minus 2 root 5 comma 0. Okay. So let me draw the root. ठीक है, तो ये अपने फोकाई हो गए, अपने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, अपने को लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मिल गई, इसेंट्रिसिटी निकाल लिया अपने. And to calculate the length of latest rectum, length of latest rectum is equal to 2 times b square by a, that is equal to 2 into 16 divided by 6, that is equal to 32 by 6 is 16 by 3. So this is our length of latest rectum. So we have calculated all the things. Okay, so everything is left. Vertices are still left. So I taught you vertices are the points where the major axis collides with the ellipse. So it is nothing but a comma 0 and minus a comma 0. So it is 6 comma 0 and minus 6 comma 0. Okay, so समझ में आ गया? I think so. Vertices क्या होते हैं? These are the points where major axis collides with ellipse. ठीक है, so I hope समझ में आ गया होगा. ठीक है, so in this way we are done with the first question. So let's move to see all the first 6 questions are on the same line. So I think I should do question number 7 now. I think I should do question number 7. Okay. So now we can do it fastly because now we have understood question number 7. See, firstly, if we have to make the form, general form, then we can do anything. Like here also, it is given to us as x square divided by 144 by 36. It will come like, 1 second. So it is x square by 144, but 36 will come down. So it will become x square by 144 by 36. So 144 by 36 is nothing but, I think 36 4 times is 144. Yes, so it would be x square by 4 plus y square by this 144 by 4, so it will come to be 36 equal to 1. And now we are again with the same question. So let me do this one. Here I can see that value of a is equal to 2, value of b is equal to 6. So I can say that my e is equal to, in this case it would be 1 minus a square by b square, because this time this thing is vertical ellipse, like y-axis is the major axis in this case and x-axis is the minor axis, because I taught you that if a is bigger, then the major axis is along x-axis, and if b is bigger, then the major axis is along y-axis. So here eccentricity would be 1 minus b square by a square, 1 minus a square by b square. So it would be 1 minus a square by b square, 4 by 36.
So it will be 1 by 9. That is equal to 8 by 9, under root of 8 by 9. So it would be 2 root 2 by 3. 2 root 2 by 3. So it would be 2 root 2 by 3. Okay. So this is our eccentricity. So we have calculated the value of A, we have calculated the value of B, we have also calculated the eccentricity. So now I can calculate anything. Length of major axis is 4, length of minor axis is 12. Length of major axis is 12, length of minor axis is 4. And foci we can calculate easily. A comma 0 and minus A comma 0. No, in this case, let me write it down. Focus in this case would be equal to BE comma 0 and minus, 0 comma BE comma 0 comma minus BE. Okay, so whenever our ellipse is like this, right, where y-axis is the major axis, so our foci also change. Foci becomes 0 comma B and 0 comma minus B. Okay, so I hope समझ में आ रहा होगा. So this is our focus, and in this case, vertices would be plus minus 0 comma b and 0 comma minus by, because in this case, vertices would be the points where the major axis will collide with ellipse according to definition. In this case, major axis is along y-axis. So here, vertices would be equal to 0 comma b and 0 comma minus b. Okay, so accordingly we can do. So I calculate A, B, and E. See, basically, in each question, you have to calculate these three parameters, A, B, and E, and then you can proceed accordingly. If you have to calculate focus, you will calculate B, E, and minus B. If you have to calculate vertice, you can use 0, comma B and 0, comma minus B. In case of vertical ellipse, like where Y is the major axis. लेकिन यहाँ पे A मेजर एक्सेस होगी, यहाँ पे X एक्सेस के अलॉन्ग एलिप्स इतना होगा, उस केस में अपने फोकस हो जाएंगे A, 0 और माइनस A, 0 और वर्टाइस हो जाएंगे A, 0 और माइनस A, 0. सो आई होप समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं, ऐसे 8 और 9 भी हो जाएंगे. अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है वर्टाइस दिए हुए हैं प्लस माइनस 5 फोकाई दिए हुए हैं और अपने को इलिप्स की क्वेश्चन बतानी है. हाँ तो अपन कर लेंगे. देखो अपने को सबसे पहले वर्टाइस देखनी है प्लस माइनस 5 इसका मतलब ये अपनी जो वर्टाइस है ये इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अपनी मेजर एक्सिस होगी. तो मैंने बताया था A, 0 और माइनस A, 0 जब भी होता है वर्टाइस तो अपनी मेजर एक्सिस होती है एक्स एक्सिस वरना वाई एक्सिस. तो ये अपने वर्टाइस क्या हो जाएंगे प्लस माइनस A, 0. तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा 5. इसका मतलब अपने क्या है कि अपना A तो है 5. ठीक है, और अपने को दिया हुआ है फोकाई. फोकाई क्या होता है A, 0. अपने को A की वैल्यू दी हुई है 4. तो यहाँ से अपन E निकाल लेंगे. E is equal to 4 by 5. अगर अपने को A पता है तो अपन ये आराम से निकाल सकते हैं. तो अपन ने E निकाल लिया यहाँ से. अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए B. तो अपने को पता होता है कि E स्क्वायर होता है 1 माइनस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से अपन E स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 by 25 is equal to 1 minus B square by A square. What is B? B is you have to calculate, and A is given to us as 5. 5 square is 25. Okay, so from here I can see that 25 minus B square equal to 16. So B square equal to 9.
and from here I can say that b is equal to 3. So we have calculated the value of a, we have calculated the value of b. Now we can easily write the equation of ellipse. It is equal to x square by a square, मतलब 25, plus b square by y square by b square, sorry, y square by b square, b is equal to 3, b square is equal to 9, is equal to 1. ठीक है, सो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया मैंने सबसे पहले दिखाया कि मेरे को वर्टेक्स के दिया हुआ है, जो मेरे को वर्टेक्स दिया हुआ था उसके हिसाब से मैंने इलिप्स डिसाइड किया। मेरा ये वाला इलिप्स था, फिर इस वाले इलिप्स के लिए मैंने ए निकाला यहाँ से, और ए यहाँ पे दिया हुआ तो 4, वहां से मैंने ई निकाला, फिर मैंने इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा के मैंने बी निकाल लिया। ठीक है, सो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। in question number 11, I think so. Question number 11 is also the same thing, just here it is talking about vertical ellipse because we are given plus minus b. So let me write what is given, then you can proceed further. So here we are given that b is equal to 13 and b is equal to 5. So from here I can calculate b equal to 5 by 13. ठीक है, तो ऐसे मेरे को ई मिल गया, फिर मैं सेंसिटिव का फॉर्मूला लगा दूंगा, कौन सा, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के मैं ए की वैल्यू भी निकाल लूंगा, तो यहाँ पे मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद मैं सीधे सीधे इस इलिप्स के फॉर्मूले में डाल के अपनी इक्वेशन बना दूंगा। कुछ नहीं करना अपने को सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, वो अपने निकाल ली है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। So let's move to question number 12. In question number 12, again it is the same thing. Let me do question number 13 because it is the same thing. In question number 13, what we are given ends of major axis. So ends of major axis are again vertices only. So we have given the ends of major axis. Ends of major axis is equal to plus minus 3,0, plus minus 3,0, no? Plus minus plus minus 3,0। ठीक है, और अपने को दिया हुआ है ends of minor axis। ये अपने को दिया हुआ है कितना, 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 2। अपने को ये दो चीज दी हुई है। ठीक है, अब देखो अपने को पता है जो अपने मेजर एक्सिस के एंड्स होते हैं, अपने को पता है कि अपने मेजर एक्सिस के एंड्स दिए हुए हैं प्लस माइनस 3,0। इसका मतलब अपनी मेजर एक्सिस होगी एक्स एक्सिस के अलावा, तो अपनी मेजर एक्सिस होगी एक्स एक्सिस के अलावा। इसका मतलब मेरे को दिया हुआ है ए की वैल्यू, so a is given to us as equal to 3, and on the similar note b is given to us as 2 because ends of minor axis वो b होता है और ends of major axis वो a होता है। so क्यों, क्योंकि यहाँ पे x, 0 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मेरी मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मेरा a हो गया 3, b हो गया 2। so from here I have been given a, I have been given b, so I can write the equation of ellipse as equal to x square by 9 plus y square by 4 equal to 1. So this is our answer for the ellipse. So I hope समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। Move to question number 14. In question number 14, what is given to us? So question number 14 के दिया हुआ है, question number 14 में दिया हुआ है ends of major axis, ends of minor axis।
अगेन वी आर गिवन द सेम थिंग, बस इस बार क्योंकि अपने को 0, y के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका मतलब मेरा b हो जाएगा √5, तो मेरा a हो जाएगा 1। सो मेरा फॉर्मूला आएगा वो इस टाइप का आएगा। सो हियर hence तो हियर मैं बोल देता हूँ जो मेरा a आएगा वो आएगा 1, और जो मेरा b आएगा वो आएगा √5। तो मेरा फॉर्मूला आएगा वो इस टाइप का आएगा, x² by 1 + y² by 5 = 1। So this is the same thing which we have done in the question number 13. Just here it is, the major axis is along y-axis and the minor axis is along x-axis. क्यों? क्योंकि मेरे को दिया हुआ है कि जो मेरा मेजर एक्सिस है वो 0, y के फॉर्म का है। इसका मतलब जो मेरा b है वो 5 है, और जो मेरी मेजर एक्सिस है वो y-axis के along है। ठीक है? So this is the same question which done in 13 parts. So I am leaving it. Let's move to question number 15. तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलना है अपने को? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दी हुई है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दी हुई है, कितनी दी हुई है? 26। ठीक है, और अपने को पता होता है कि जो अपनी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है वो 2a के बराबर है, तो अपने को 2a दिया हुआ है 26। यहाँ से अपन लोग a निकाल लेंगे, एक आ जाएगा 30। यहाँ से अपन ने a निकाल लिया, फिर अपने को क्या दिया हुआ है? फोकाई दिया हुआ है +-5,0। फोकाई दिए हुए +-5,0। तो अपने को पता है फोकाई e,0 होते हैं, तो e अपने को दिया हुआ है 5। यहाँ पे अपने पास e आ जाएगा कितना? 5/30। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने ए निकाल लिया, e निकाल लिया, मेरे को b निकालना है। तो मेरे को फोकाई e,0 जो होगा, e,0 इसका मतलब जो मेरा इलिप्स है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर्ड है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी मेजर एक्सिस है। तो मेरी सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? e² = 1 - b²/a²। ठीक है, तो अपन यहाँ से क्या कर लेंगे? यहाँ से अपन वैल्यू निकाल देते हैं। 25/169 = 1 - b² अपने को निकालना है, डिवाइड बाई a² कितना हो जाएगा? 169। तो यहाँ से जब अपन लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 169 - 25 = यहाँ से बस b आ जाएगा 12। तो अपने a निकाल लिया, अपने b निकाल लिया, अपने e निकाल लिया, अपने को मतलब कितना है? क्या हो जाएगा? x²/a² मतलब 169 प्लस y²/b² मतलब 144 = 1। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। कुछ नहीं किया मैंने, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाला है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मेरे को दिया हुआ है एक्चुअली 26, वहां से मैंने एक वैल्यू निकाली, और फिर मेरे को फोकाई दिया हुआ था e,0 फॉर्म में, तो मैंने वहां से सेंट्रिसिटी निकाली e, और फिर मैंने इस सेंट्रिसिटी का फॉर्म लगा के मैंने b निकाल लिया। मैंने अपनी इलिप्स की क्वेश्चन लिख दी। सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन आई थिंक सो। सो समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें क्या बोला है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दी हुई है 16, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से मैं b निकाल लूंगा 8। ठीक है, इसके बाद मेरे को दिया हुआ है फाइव दिया हुआ है +-6,0 +-0, +-6, इसमें मेरे को दिया हुआ है b की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को e क्या आ जाएगा? यहाँ से पास e आ जाएगा 6/8 मतलब 3/4। कुछ नहीं है, बस हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं एक्स एक्सिस के नाम, फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं वाई एक्सिस के नाम, सेम वही चीज वापस कर रहे हैं अपन लोग। तो वापस अपने वाला फॉर्मूला देंगे e² = 1 - a²/b²। यहाँ पे a²/b² क्यों आया? क्योंकि ये वो वाला इलिप्स है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेजर एक्सिस है उसकी, इसलिए अपन ने a²/b² लिया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो क्या लेते हैं? b²/a²। यहाँ पे अपन वैल्यूज डाल देते हैं, तो 9/16 = 1 - a²/b², b is 8, 8 का square is 64. Okay, so
64 minus a square. I think what will come? It would come like 36 is equal to 64 minus a square. 64 minus a square. So from here I can write a square to be equal to from here I can see that my a is equal to I have done some mistake or what. 64 minus a square is equal to 36. So a square is equal to 64 minus 36. B is given to us as 6. So E is equal to 6 by 8, which is 3 by 4. So 3 by 4 square is 9 by 16 times is equal to 1 minus a square by b square. Oh, this is length of minor axis. That's the error. This is length of minor axis. Length of minor axis is 16. This means this is A. Because our major axis is along y-axis. Yeah, I have also mistaken here. Why? Because since foci is given along 0, y. So from here we are sure that our major axis is y-axis. But here it is given length of minor axis and I have taken length of major axis. That's why I did wrong. So here not b is equal to it, but actually a is equal to it. Why? Because this length of minor axis. I took it to be major axis. Because our foci is along 0, plus minus 6. मतलब वो y-axis के along है अपनी major axis. माइनर एक्सेस मतलब अपना A8 है। अगर अपना A8 है तो अपन यहाँ पे 64 डालेंगे 64 by b स्क्वायर। ठीक है, तो फिर अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे b स्क्वायर के लिए। तो यहाँ से अपने पास b आ जाएगा कितना, यहाँ से अपने पास b आ जाएगा 10। ठीक है, तो अपने यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं x स्क्वायर बाई 64 प्लस y स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 1। तो ये अपना आंसर समझ में आया ना। बस गलती क्या हुई यहाँ पे, अपने क्या करी यहाँ पे, मैंने गलती कर दी कि मैंने लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस लिख लिया जबकि मेरे को माइनर एक्सेस किया हुआ था। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है मुझे। क्वेश्चन नंबर 17 में मुझे बोला गया है फोकाई दिया हुआ है प्लस माइनस 3,0। ऑब्वियस सी बात है x, 0 के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ये a की a इक्वल 3 है, a इक्वल टू 3 मुझे दिया हुआ है 35। फिर मुझे दिया हुआ है a मेरा 4 है, a मेरे को 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं e निकाल दूंगा। इसमें मेरे पास e कितना हो जाएगा, e हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब मैंने a निकाल लिया, मैंने e निकाल लिया, तो मैं वापस b निकाल दूंगा वाला फॉर्मूला लगा के। e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ठीक है, तो मैं उसको सॉल्व नहीं करता, मैंने सब लिख दिया है। मेरे को फोकाई दिया हुआ था, तो मेरे को ए दिया हुआ था, तो मैंने ए इक्वल 3 लिख दिया। फिर मेरे को ए दिया हुआ तो क्वेश्चन से मैंने इससे डिस्टेंस निकाला, और इससे डिस्टेंस निकालने के बाद मैंने इस पर का फॉर्मूला के मैंने आराम से मैं बी भी निकाल सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास ए आ गया, बी आ गया, तो फिर मैं इक्वेशन अवेलेबल लिख सकता हूँ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 करके। ठीक है, तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन 18 पे। क्या बोला है इसमें, को बी दिया हुआ है और इस सेंटर से दी हुई है 4, बी दिया हुआ है 3 और इस सेंटर से दी हुई है 4। एक मिनट, C is given to this 4. What is C here? Let me see what is C. C से क्या डिनोट किया इन्होंने यहाँ पे,
What is C? Okay. A square minus B square is equal to C square. So this is our uh, general मतलब अपन लोग जनरली इसको ऐसे देते हैं कि जो मेरा सी स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस मेरे को सिंपलिसिटी को सिंपलीफाई करना था, इसलिए मैंने सी स्क्वायर ले लिया. बाकी सिंपलिसिटी वैसे निकलेगी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर के अंडर से. सो सी स्क्वायर एक जनरल चीज है जिसको अपन लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं. ठीक है, तो अपने को यहाँ पे देखो, अपने को यहाँ पे सी दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो अपन वहां से ए निकाल सकते हैं. तो अपन ये निकालते हैं, ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. A square is equal to C square plus B square, B square plus B square plus C square. तो उसका से याद रख सकते हैं कि जो मेरा A square होता है वो B square plus C square के बराबर होता है. ठीक है, तो यहाँ से मैं A निकाल देते हैं, इसको निकालते हैं, कितना आ जाएगा, B दिया हुआ है 3, C दिया हुआ है 4, B square 9, C square 16, 9 to 16 25. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A ऐसे A आ जाएगा 5. मेरे पास A आ गया, मेरे को B दिया हुआ था क्वेश्चन में, B कितना दिया हुआ था, इसमें B दिया हुआ है 3, मेरे पास A है, मेरे पास B है, तो मैं आराम से एक क्वेश्चन में लिख सकता हूँ. क्या हो जाएगा वो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये मेरे पास एलिप्स की क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें चीज आपको ध्यान रखनी थी कि सी क्या चीज होती है. तो सी स्क्वायर जो होता है उसको अपन लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इक्वेट करते हैं. तो सी स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर अपन ए स्क्वायर या फिर अपन ए स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोल सकते हैं, वो एक ही बात है. मैंने वहां से ए और बी की वैल्यू निकाल ली, और ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद अपन लोग आराम से क्वेश्चन ऑफ एलिप्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो देखो मैं हर क्वेश्चन में कर क्या रहा हूँ, हर क्वेश्चन में कैसे ना कैसे करके ए और बी तक पहुंच रहा हूँ. जैसे मैं ए और बी तक पहुंच गया, मैं आराम से इस सिंपलिसिटी निकाल के एलिप्स की इक्वेशन लिख सकता हूँ. तो मेरे को कुछ भी करके मेरे को सिर्फ जनरल फॉर्म तक करने एलिप्स का. एलिप्स का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. वो जनरल फॉर्म पकड़ के मेरे को इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए सिर्फ अपने को ए और बी की वैल्यू चाहिए. वो अपन लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अपन सॉल्व करके आराम से ए और बी की निकाल सकते हैं. ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, आपको दिया हुआ है सेंटर. सेंटर दिया हुआ है 0,0 पे. ठीक है, फिर अपने को दिया हुआ है मेजर एक्सेस बाई एक्सेस पे, मतलब अपना इलिप्स जो है उसकी मेजर एक्सेस बी है और माइनर एक्सेस ए है. ठीक है, और फिर दिया हुआ है पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, passes through 2 points that is equal to 3,2 and 1,6. 3,2, 1,6. ठीक है, मेरे को ये चीजें दी हुई. अभी सबसे पहले मैं इलिप्स की कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, क्या हो जाएगा. सबसे पहले मेरे को पता है जो मैंने इलिप्स क्वेश्चन वो टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इस टाइप की इलिप्स की क्वेश्चन होती है. ठीक है, देखो मैं क्या दिया हुआ है, सेंटर 0,0 दिया हुआ है, सेंटर 0,0 दिया हुआ है. सबने को बदलता है, सबने को बदलता है कि अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है. स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका मतलब इसका फॉर्म जनरल वाला होगा, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये चीज अपन ने पैराबोला में कही थी कि जब भी अपना सेंटर 0,0 पे होगा तो अपन लोग स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर लेंगे. वैसे यहाँ पे जब अपना सेंटर 0,0 पे होगा तो अपन लोग स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर लेंगे. और अपने को 2 पॉइंट्स दिए हैं, अपन 2 पॉइंट्स डालेंगे, उससे अपने को 2 इक्वेशन आएगी. 2 इक्वेशन को सॉल्व करके अपन लोग ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे. तो कर सकते हैं, पहले दिया हुआ 3,2, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू 1. ठीक है, 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू. ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, और दूसरा क्या दिया हुआ है 1,6, मतलब 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 36 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. मेरे पास 2 इक्वेशन में 2 वेरिएबल है,
मैं यहाँ से आराम से सब ए और बी को निकाल सकता हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा क्या, इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा बी स्क्वायर तो आएगा 10 और ए स्क्वायर आएगा 40। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि मेरा बी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बस मेरा बी हो जाएगा 10 और यहाँ से ए हो जाएगा कितना, रूट 10। ठीक है, तो ये मेरे ए और बी हो जाएंगे। यहाँ से मैंने ए और बी निकाल लिया। ए और बी निकालने के बाद मैं आराम से लिप्स की इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो then मेरी लिप्स की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा 40 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा 10 इक्वल टू 1। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ए और बी निकालना है, तो मेरे को सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से मतलब था, तो इसको और सिंप्लीफाई कर और सिंपली कर सकता था, मेरे को ये चीज निकालने की जरूरत नहीं थी। सो लेट मी इरेज दिस थिंग because I don't need to calculate this thing. Why? Because I can easily do my work using b square and a square only. Because in question of ellipse, I have to calculate the value of a square and b square only. So why should we calculate a and b? ठीक है, समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। So okay. तो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया मैंने। मेरे को 2 पॉइंट्स दिए हुए, सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा सेंटर 0,0 पे, सेंटर 0,0 पे, उससे मैंने क्या डिड्यूस किया, उससे मैंने डिड्यूस किया कि मेरा जो इलिप्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इलिप्स की इक्वेशन लिख ली। फिर उस स्टैंडर्ड फॉर्म वाले इलिप्स की इक्वेशन लिखने के बाद मैंने उसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, मैंने वो 2 पॉइंट्स डाले, उससे मेरे को 2 इक्वेशन मिली। एक मिली 9/a² प्लस 4/b² इक्वल टू 1 और एक मिली 1/a² प्लस 6/b² इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, मेरे पास a² और b² की वैल्यू आ गई। a² और b² की वैल्यू निकल मेरे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। So it is that simple. In each question, you have to just do one thing. You have to calculate the value of A, you have to calculate the value of B, and then you are absolutely done. Okay. So here it goes. Let's move to the last question of today. Question number 20. I hope so. Now you have question number 20. So this is the last question for today. मतलब यहाँ से अपन लोग देख सकते हैं कि मेरा एग्जिट कितना सिंपल है। मेरे को सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकालनी है एंड देन आई कैन डू एनीथिंग। आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, आई कैन कैलकुलेट इसेंट्रिसिटी, आई कैन कैलकुलेट फोकस, आई कैन कैलकुलेट वर्टिसेस, आई कैन कैलकुलेट length of like the sector, anything I can do. I could just calculate the value of A and B, nothing else. Okay, so now let me do the last question. What is given to us as we have given that major axis is along x-axis और क्या दिया हुआ है r-axis 2 points 4,3 and 6,2, 4,3 and 6,2। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास करता है ये अपना इलिप्स। तो मैं वापस, क्वेश्चन तो वही सेम चीज है, वही उस वाले केस में मेजर एक्सिस वाई एक्सिस थी, इस वाले केस में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सो लेट मी सॉल्व इट। स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
इक्वल टू 1। सो ये मेरी दूसरी क्वेश्चन है, तो मैं इसमें पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर की जगह 16 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एक चीज तो ये, और दूसरा 36 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दो ही क्वेश्चन आ गई। तो वापस देखो, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि मेरे को ए और बी इंडिविजुअली निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन इजीली डू माय वर्क यूजिंग ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। सो आई हैव टू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस। सो मैंने किसमें सॉल्व किया, इसमें सॉल्व कर देता हूँ। इट वुड कम लाइक 16 बी स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए लेट एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू, एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, लेट m इक्वल टू ए स्क्वायर एंड n इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ताकि मैं को बार बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखना पड़े। तो आई विल गेट 16n प्लस 9n इक्वल टू 16n प्लस 9n इक्वल टू mn। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे मिलेगा 36n प्लस 4n इक्वल टू mn। ठीक है, सो यहाँ से मेरे को दो इक्वेशन मिल रही है। ओके, तो मुझे दो इक्वेशन मिल रही है। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं इक्वेट करता हूँ, दोनों में नहीं आ रहा है ना, तो I can equate both of them. What will I get? I will get 6 minus 16, 20n equal to 9n minus 4m, 5m. So एक चीज मुझे मिल गई, मुझे 20n और 5m बराबर है। ठीक है, तो एक चीज तो ये मिल गई। बाकी मैं क्या करूँ, how to do this? Hmm, let me simplify first. Here I can write that m is equal to 4n. ठीक है, तो मेरा जो भी m होगा, जो भी मेरा n होगा, m उसका 4 टाइम्स होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक न्यूमेरिकल कोई ऑप्शन नहीं है। 16n प्लस 36n equal to 16n plus 9 plus 36n equal to mn 4n square. Okay, so from here I can see that 36 plus 16 is nothing but 52. 52n is equal to 4n square. ठीक है, अब यहाँ से अपन n इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, क्योंकि n जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है और बी में लेंथ है, लेंथ 0 हो नहीं सकती। इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 30। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ से मैंने निकाल लिया बी स्क्वायर इक्वल टू 30। और फिर मेरे को पता है कि मेरा जो ए स्क्वायर है मेरे एम के बराबर और एम इक्वल टू 4 है, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 30 इक्वल टू 52।
ठीक है, तो मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया, मैंने बी स्क्वायर निकाल लिया, मैं आराम से इक्वेशन ऑफ एलिप्स ले लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 52 प्लस वाई स्क्वायर बाई 13 इक्वल टू 1। तो देखो उसमें क्या किया मैंने, इन दोनों को बना लिया इक्वेशन, दोनों को मैंने ए स्क्वायर को एम मान लिया, बी स्क्वायर को एम मान लिया, ताकि मेरे को बार बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखना पड़े। बाद में मैंने सॉल्व कर दिया, दोनों तरफ एम था, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर देने मेरे पास ये वाला फॉर्म आ गया। क्या फॉर्म आ गया? ये वाला कि एम इज इक्वल टू 4 ये वाला फॉर्म आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस एम को ले जाके इस क्वेश्चन में डाल दिया। इस क्वेश्चन में डाला तो मेरे क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन बन गई, जिसमें मेरे पास आ गया 52 एन इक्वल टू 4 एन स्क्वायर। लेकिन जब मैं यहाँ से काटूंगा तब एन इक्वल टू 0 मेरा आंसर हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एन इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी लेंथ है, तो बी 0 तो हो नहीं सकता, उनमें मेरा एलिप्स नहीं बनेगा। तो मैंने एक एन को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास एन क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा 52/4 मतलब 13, और मैं एन बी स्क्वायर मैंने लिया था तो मेरा बी स्क्वायर आ जाएगा 13, बी स्क्वायर 13 आ गया। On the similar note, I calculated the value of a square also by 4 into m by 4 into n. So I get a square equal to 52. So I got the value of a square. I got the value of b square, and I wrote that in the equation of ellipse. So I can easily get the equation of ellipse. So इस तरीके से अपन ने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। देखो मेजरली इसमें क्या था ना, अपने को सिर्फ एक तो पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरी चीज अपने को जो भी दिया हुआ है, अपने को उससे ए और बी निकालना आना चाहिए। अगर अपन ए और बी निकाल सकते हैं तो अपन इक्वेशन ऑफ एलिप्स बना सकते हैं, एंड देन वी आर डन। समझ में आ गया? बस एक चीज याद रखना है कि जब अपनी ये एक्सिस के अलग मेजर एक्सिस होगी तो अपना ए मेजर होगा, और जब वाई एक्सिस के अलग मेजर एक्सिस होगी तो अपना बी मेजर होगा। ठीक है, तो बस ये चीज याद रखना। बाकी तो चल रहा है, इस सिंप्लिसिटी के दो फॉर्मूला होते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तब होता है जब आपकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है, और 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर तब होता है जब अपनी मेजर एक्सिस एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट में अपन लोग करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।